हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। SBI Cards and Payment Services NSE 1.24% with a target price of rupees 1000. The current market price of SBI Cards and Payment Services Limited is rupees 829. 1000 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 829 with a target price of rupees 1000. Time period given by analyze in is 1 year when SBI cards NSE 1.24% and payment services price can reach defined target. Okay. SBI cards and payment services incorporated in the year 1998. 1998 is a small cap company having a market capital of rupees 78,078.52 crore. ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। एक फाइनेंशियल कंपनी है ये। ओके, फाइनेंशियल्स। फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 September 2022, द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अ स्टैंड लोन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 3,453.32 करोड़, अप 5.84% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ रुपीज 3,262.85 करोड़ एंड अप 28.12 करोड़, 12%. Okay, up 20.12% from last year same quarter. Total income of rupees 2,695.46 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 525.64 crore in latest quarter. Okay, investment rationales. SBI cards is the country's second largest credit cards issuing company. The brokerage expect SBI cards to log a strong cards in force CIF CAGR at 18% and spends CAGR of 30% in final year 2022. Okay, and 25E, thereby largely maintaining its market share. Okay, promoters FII holdings. Promoters held 69.64% stake in the company as of 30 June 2022, while FIIs own 8.29%, DIIS 16.24%.